The Supreme Court will deliver its verdict on a batch of petitions challenging the validity of the centre's 2019 decision to scrap Article 370. Ahead of the verdict, security has been tightened in Jammu and Kashmir. The hearing by a 5-bench constitution bench comprising of Chief Justice D.Y. Chandrachud and Justices Sanjay Kishan Kaul, Justice Sanjeev Khanna, Justice B.R. Gawai and Justice Suryakant commenced on August 2nd, lasted 16 days over a 35-day period, and the order was reserved on September 5th. My colleague Ajay Chandal joins us on the broadcast. Ajay, of course, now what we are being given to understand is that security has tightened in Jammu and Kashmir. If you could give our viewers more details on this. Well, yes, high alert has been sounded in Jammu and Kashmir ahead of this judgment, and definitely it is to basically take precautions because we have seen that how Pakistan and the Pakistani proxies are terrorists. They always try to disturb peace, and especially after the abrogation of 370. But we have seen that Pakistan, who was not able to do anything, like they have tried to raise voice on the international platform as well. But it was conveyed to them to Pakistan that they have nothing to do with the Jammu and Kashmir. That is why I believe that Pakistan is frustrated and they could try to disturb peace in the Jammu and Kashmir. And for that purpose, security measures are put in place by the higher authorities, and Jammu and Kashmir Police, Army, CRPF and other intelligence agencies, they are on the alert in Jammu as well as in Kashmir to foil any nefarious plan of terrorists in the Pakistan, because we know that how things have improved in the Jammu and Kashmir in last several years, last 4 years, and that indicates that people of the Jammu and Kashmir, they had seen enough bloodshed and they don't want to see it more, and that's why they believe that after the abrogation of 370, the development which is taking place over here, the things and the investment which came here to the Jammu and Kashmir, and the peace, which basically the major factor in the Jammu and Kashmir, that is something which was required for required for the people in Jammu and Kashmir, but it was not done. But after the abrogation of 370, that is the big change they have seen on the ground. Right, absolutely, Ajay. With that, I'd like to thank you for joining us on the broadcast and sharing those details with our viewers. Meanwhile, a lot of reactions have been pouring in ahead of the verdict. Let's quickly listen in. हमें एक उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ इंसाफ होगा, और ये कि जो भी हमने कहा 5 अगस्त के फैसलों के मुखालफत में, उसका कोई जवाब नहीं आया जो सरकार ने उन्हीं पर किया जो पोस्ट फैक्ट होते हैं। 5 अगस्त के बाद वाले वाक़ात थे, जी अमन हो गया, टूरिस्ट आ गया, डेवलपमेंट हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा, बल्कि पहला एक एफिडेविट लेने से इनकार भी किया। कहा ये मामला सारा जो है संवैधानिक है, ये मामला सारा जो है ये आइन का है, तो क्या आइन के मुताबिक कदम उठाएंगे? नहीं उठाएंगे, तो उसी पर हमें फैसला करना है। तो जब जुडिशल सिक्योरिटी होगी, जब इस कसौटी पर, आइन की कसौटी पर इनको 5 अगस्त और 6 अगस्त के फैसलों को जब परखा जाएगा, तो हमें पूरी उम्मीद है कि फैसला जम्मू कश्मीर के अवाम के हक़ में होगा, जिनके हुकूक छीने गए, ज़मीन के हवाले से, नौकरियों के हवाले से, कानून बनाने के इख्तियार के हवाले से, तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो फैसला होगा वो अवाम के हक़ में ही होगा। We believe that Supreme Court will rightly uphold the Constitution as well as the sentiments of the people. All rights of the people of Jammu and Kashmir, which were protected earlier with regard to land and jobs, they were abruptly, unilaterally and democratically taken away. His state was downgraded and disbanded, divided into 2 UTs, and elections have not been held for the last 5.5 years, more than 4.5 years after the abrogation of Article 370 also. Ladakh got a UT, but you are ready to discuss certain measures, safeguards for land and jobs and their identity, but you are not ready to discuss that for Jammu and Kashmir, the rest of the UT. It was one state. देखिए, बड़ी मुबारक की बात है, जम्मू कश्मीर में एक खुशी की लहर दौड़ चुकी है और जम्मू कश्मीर की आवाम बेहद खुश है। वो आज बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का कि ये इंसाफ हमें मिलेगा, संविधान की प्रोटेक्शन हमारे होगी, और जो हमारा गैर आईनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम 5 अगस्त 2019 को हुआ है वो सब रिवर्स होगा
और भारत के संविधान ने ही हमें, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही, महात्मा गांधी जी के इस देश ने ही हमें 370-35 से दिया था, स्टेट सब्जेक्ट दिया था, स्पेशल स्टेटस दिया था, और उसी की जंग हम 5 अगस्त 2019 के बाद लड़ रहे हैं। और मजे की बात तो ये है कि 5 अगस्त 2019 को काले दिन के तौर के ऊपर जम्मू कश्मीर की आवाम मनाती है, और आज एक जो ऐतिहासिक फैसला आने वाला है, ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। 370 के कारण जम्मू कश्मीर में कई जानें गई हैं। कश्मीर ने 8000 सुरक्षा कर्मी गंवाए हैं। जम्मू कश्मीर ने तकरीबन 20,000 इनोसेंट सिविलियंस की जानें गई हैं, और हर मानव अधिकार का हनन इस प्रावधान के तहत हुआ है। तो मुझे पूरा यकीन है कि उच्चतम न्यायालय इस आर्टिकल को 370 को वापस नहीं लाएगी। ये निरस्त हो चुका है, और ये वो आर्टिकल है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता था, राइट ऑफ इक्वलिटी को वायलेट करता था, माइनॉरिटीज़ के साथ डिस्क्रिमिनेट करता था। तो जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है हमारा, वो कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वोप्रिय मानेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन के सर्वोप्रियता के तहत जो मानव अधिकारों का हनन है उसे वापस नहीं आने देगा। जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है जो एक्ट, उसे वापस नहीं आने दिया जाएगा। तो हम आज हमें पूरी उम्मीद है कि 370 आज इतिहास पूर्ण तरह से बन जाएगा। We expect the verdict to be according to the constitution of this country. As the Chief Justice himself has said, that he is first and last a disciple of the constitution of this country. So we are hoping that they will go by the constitution, and as per the arguments that were put before them, we have won this case hands down. And let's see now what happens today. Jammu, Kashmir and Ladakh stand on the same page that 370 has to come back to its shape, the way it, as a matter of fact, in the constitution of our country, it exists as it was on 4th August 2019. It has only been de-operationalized. आज एक ऐतिहासिक दिन होगा, अगर फैसला सही आया तो ये आज आपको बताऊं कि सुबह से ही हमें जितनी टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं मंदिरों से, मस्जिदों से, गिरजाघरों से, और दुआएं की जा रही हैं गुरुद्वारों से कि चीफ जस्टिस साहब जम्मू कश्मीर की 1,30,00,000 अवाम को इंसाफ दीजिए। जो हमारी हमसे आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को छीना गया है, हमारी वजूद और पहचान को बचाइए चीफ जस्टिस साहब। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जंग हमने 5 अगस्त 2019 को ये जंग का ऐलान किया था, और आज सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक मेरे भाई मुजफ्फर शाह साहब और हम शाना बशाना चले हैं। इनका जो इम्पैक्ट होगा वो पूरे मुल्क पे होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू कश्मीर की एक्सरसाइज कर सकती है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की पावर्स, तो ऑफ टीआरई वही प्रिंसिपल जो है वो पार्लियामेंट को भी होगा कि पार्लियामेंट भी वो सब पावर्स इख्तियार कर सकती है। वो तमाम पावर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया को थी, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी के अगेंस्ट जाएगा, केशवानंदा भारती की जजमेंट के अगेंस्ट होगा। तो अल्टीमेटली अगर सुप्रीम कोर्ट ये हेल्ड करता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की पावर एक्सरसाइज कर सकता है, तो आप केशवानंदा भारती के अगेंस्ट जा रहे हैं। दूसरा है कि किसी भी स्टेट को आप क्या रिड्यूस करके उसको यूनियन टेरिटरी विदाउट द कंसेंट ऑफ, विदाउट द ओपिनियन ऑफ द असेंबली, पार्लियामेंट के थ्रू कर सकते हैं अंडर 356। जब 356 लागू है तो ये क्वेश्चन पहली बार सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा, जो आज डिसाइड होना है और फॉर पोस्टेरिटी आने वाली जनरेशन के लिए वो डिसाइड हो रहा है। सारे पक्ष ने विस्तार से अपने तथ्य और तर्क रख दिए, वो भी संविधान पीठ के सामने। संविधान पीठ का नेतृत्व खुद सीजीआई कर रहे हैं, वरिष्ठ उसमें न्यायाधीश गण है। अब फैसले के अनुसार जो भी फैसला है सभी पक्षों को स्वीकार करना चाहिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.